Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Market Today, your best place to get what's the latest happening intraday on Dalal Street. My name is Sakshi Batra. I join to you from a very wintry Delhi where the weather is getting colder and colder, and perhaps the same thing is getting replicated on Dalal Street. As usual, we'll start with our daily chart of the Nifty. Yesterday, which was Tuesday, was anything that you would have seen on earlier Tuesdays when normally we see markets rising pretty well. Yesterday, the Nifty lost 330 points, 24,336 for you. The Bank Nifty was down by about 1100 points at about 52,834, and the Sensex also lost about 792 points. That was the state of play for three major indices, and the reasons are pretty clear. We are going through a phase where there is a risk of trade happening globally because of the US Federal Reserve meeting that starts today on Wall Street and will end tomorrow. So this is something that is troubling a lot of risk on traders globally, and that's the reason why you see mild sell-offs happening in markets across the world, whether it's Asian, whether it's European, and of course Wall Street as well. It's a given that a 25 basis point rate cut will come, but what is really worrying the rest of the world is the comments that the US Federal Reserve might make, and before that, sensible traders and aggressive traders are either booking profit or taking mild short positions. Now in India, there is another problem apart from the global one that we are looking at. Slowing economy, as also new norms that are coming into play by the market watchdog in the futures and derivatives market, which the volatility is now becoming unbearable for retail traders. So SEBI has released a set of new instructions for overseas derivative instruments primarily used by foreign institutional investors to hedge their local positions. Now in those new rules that have come in and are effective fairly soon, there is this process of knowing the final position holder of these short or long trades in options and futures. That is, the granular data of who the final owner of this particular trade is are now more stringent. Apart from that, hedging requirements have been tightened as well. It essentially means that SEBI is trying to curtail volatility in the F&O space, which is harming investors, especially traders on the weekly expiry day. All of us remember the jerky movement that the Nifty and the Sensex had on last Friday, and on every Thursday or Friday, whichever is the weekly expiry, you see a massive volatility which has nothing to do with the underlying strength or the weakness of the market. Now let us see what we are looking forward to today. In any doubt, there is going to be turbulent trade on the Nifty and the Bank Nifty today. Event-led selling is seen. That is, this new norms governing FIIs in the F&O space, and of course the overhang of the Federal Reserve meet. Tomorrow, Thursday, tonight is when the meet ends, and tomorrow, Thursday, which is the weekly expiry of the Nifty, we will have the US Federal Reserve's result impacting our markets. Apart from that, the most important thing that you can do, ladies and gentlemen, if you are a rookie trader or new to the market, is save your capital. That is the most important thing that is necessary. Stay on the sidelines for 1 or 2 days, and then let us see when this volatility dies down. For the moment, it is a bit of a negative as far as market cues are concerned. You have crude oil prices firming up, you have the US 10-year yield firming up, and of course we are ahead of a major event. Only delivery based trades are working, and working very well in the sectors that are traditionally moving ahead of the budget, which is the fertilizer space, the railway space, the defense space, and of course the PSU banking space. Retail traders are in a flux, and they are advised to focus on cash counters. So this is the theme that is running in the markets today. A lot of turbulence is expected, and more importantly, you have the main event with us. We'll be shortly joined by Mr. Gaurang Shah, Senior Vice President for Geojit Financial Services,
to discuss the state of play on Dalal Street. A little later, Mr. Arun Kejriwal, market expert, will be joining us at 9:30, and of course, Prashant Tapse, research analyst at Mehta Securities, will also be joining us. More importantly, there are three major listings in the IPO space that are going to happen, and all three of them received tremendous response from investors: Vishal Megamart, MobiKwik, and Sai Services. So please keep these major thoughts in mind. Gaurang Shah from Geojit Financial Services will be with us shortly. What else do you need to look at? The entire steel space. Meetings between the industry and the government of India have come up with this dire need to impose an import duty on finished steel products which are being brought into India via China, and that is being done to protect the domestic industry, because Chinese imports of steel are at prices which are inimical to the domestic health of the company. The other stock that I have in mind is Vabag, the company which had recently won a 2,400 crore rupee order from the Saudi government to set up a water distillation plant in Saudi, has informed exchanges that the Saudi government, for reasons best known to them, have cancelled that order, and more news is awaited. So please keep an eye out on Vabag, and of course Ambuja Cement. The merger ratio between its most recent buy, which is Sanghi Cement, and the parent Ambuja has been fixed. It is 12 Ambuja shares for every 100 that you hold in Sanghi Industries. So please keep that in mind as far as markets are concerned. A lot of flux is going to visit us today, and it's best that if you have no positions, that you remain on sidelines and wait for this volatility to die down. So the listing ceremony of Vishal Megamart is what we are interested in, ditto for MobiKwik, and ditto for Sai Industries. What else do I have in mind? Well, let's look at the F&O space and check out the top performers as far as markets are concerned. We've seen a strong move coming into United Spirits and National Aluminium. Both counters were red hot for bulls yesterday and are likely to see this momentum continue not only today but also in the times to come. So please keep an eye out on United Spirits futures, which closed at 1570 yesterday, up 2.6%. National Aluminium at 226.9, up 2.5. These are the ones that are in top shape as far as the broader F&O space is concerned, but a secular trend coming into the real estate space, and therefore look at Oberoi Realty, fresh highs 23.22, up 2.7% in Tuesday's trade, and of course who can forget the fantastic rally that has come into Max Health. So please keep these 4 or 5 points in mind as far as markets are concerned. On the short side, let's look at spaces that are being looked into by bulls, by bears. This is the entire space of NBFCs. Profit booking in Shriram Housing Finance. This is down 4.9%, 2986. L&T Finance down 4.4% at 141.2. These are the two top losers in the F&O space in the stock futures segment, and of course there is selling pressure on Bandhan Bank and Himachal Futuristic as well. So these are the spaces that we are looking at in terms of volume busters. This is PVR Inox, which rose very smartly, 23 rupees yesterday at 14.99. Metropolis, this is again the hospital chain that's doing immensely well, down 34 at 21.80. Granules doing phenomenally well yesterday, 1% higher at 590. The intraday high was 591.8, and of course you have a strong move coming into the entire fertilizer space. Keep an eye out on National Fertilizers, Rashtriya Chemical Fertilizers, as also Fact, Madras Fertilizers, and of course Nagarjuna Fertilizers. The run up to the budget as far as position taking is concerned in the fertilizer space has begun. What else is in top shape? We are also looking at the defense counters.
We are also looking at Mazgaon. We are also looking at Garden Reach and Cochin Shipyard, as also Zen Technologies. In the midst of a very sharp sell-off yesterday, we saw Mazgaon Dock grow up by about 5%. Garden Reach and Cochin is also doing pretty well, but keep an eye out on Zen Technologies in top shape, and also the rest of the market, which is doing phenomenally well in the railway space. Keep an eye out on IRCON, RailTel, IRFC, and of course RVNL. It is almost now certain that the second half of the financial year will see a lot of run-ups that are going to happen because of government spending, and railways is a priority sector. The stocks that I have mentioned, RITES, RailTel, IRFC and RVNL, have corrected substantially from their previous record highs and now trading in fairly decent valuations. We've already seen 2 sets of orders being released by the railway, which is for the anti-collision devices called Kavach. They have done phenomenally well. The companies that are listed, which is Kernex Microsystems and HBL Power. Then we've had wagon makers also getting fresh orders, and in order of falling beta, this is Jupiter Wagons, this is Titagarh Wagons and Texrail. So this is what is happening, ladies and gentlemen, as far as markets are concerned in the pre-open space. We will shortly be joined by Mr. Gaurang Shah, Senior Vice President for Geojit Financial Services. But at the meantime, let's also focus on some other spaces that are doing immensely well, and the internet space comes into mind. Look at Nykaa, the most recent entrant from the internet space in the FNO. The stock rose 1 percentage point at 174 rupees, but at 177 rupees. But very hectic activity was seen on Nykaa. Keep in mind Devyani International, keep in mind Paytm and PB Fintech. So these are the stocks that have done immensely well. Let's look at the same time the top performers in the month of December as far as the FNO space is concerned. Within automobiles, it's Apollo Tyres, up 7.1%. Tire stocks are doing phenomenally well. The second top gainer in the auto FNO space is MRF, up 5.6%. Within banking, beaten down counters have outperformed. RBL Bank 5.6% higher, ICICI Bank at a record high 3.3% higher. Within the finance NBFC space, there is no stopping gold financing companies. Manappuram Finance has appreciated 15%. The commodities exchange king MCX is up 10.4%. Muthoot Finance gained 9.5% and Bajaj Finance rose 9.4%. These are the outperformers in the NBFC space. Capital goods, there's absolutely no stopping. Dixon Technologies, a series of new contracts with the Chinese mobile handset maker Vivo, and of course this background of the PLI scheme doing very well has fueled a very sharp rally in Dixon. Fresh record high 19,007, at the moment up 21% in the FNO defense expiry. Voltas 7.1% and ABB and Siemens up 4.6 and 5.3% respectively as far as the capital goods space is concerned. FMCG is having a torrid time, a lot of selling pressure coming in, but outperformers are Jubilant Foods up 6.2% and Titan 5.7%. Let's get our friend into the conversation. Mr. Gaurang Shah, Senior Vice President, Geojit Financial Services, joins us. Namaskar Gaurang ji, शुभ प्रभात। और किस हिसाब से आप सेंटिमेंट को देख रहे हैं? दलाल स्ट्रीट में काफ़ी सारी परेशानियां घेरती हुई भारतीय बाज़ारों को, और उनमें से अब जो लेटेस्ट है वो सेबी का सर्कुलर है ओवरसीज डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स पर लगाम कसती जा रही है बुल्स पर। क्या लगता है आपको? धन्यवाद शैल भाई, सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो कल जो सेबी के तरफ से बातें आई और आज सुबह स्पष्टीकरण भी आया है सेबी के तरफ से शैल भाई, कि जो तर्क बाजार ने लगाया है उस सर्कुलर का वो उसके बिल्कुल विपरीत है।
और मेरे ख्याल से एक खबर को लेकर के रिएक्शन बाजार में कल हमने देखा, वरना तो कोई कारण नहीं था कि 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट या 300 पॉइंट्स के ज्यादा की गिरावट निफ्टी में आए। करेक्ट। सेंसेक्स में 1000 पॉइंट की गिरावट आए, तो आज थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से नीचे से उभरेगा बाजार। इस सोमवार को जब इस हफ्ते का बाजार का ब्यौरा जब हमने यूट्यूब पर रखा था हमारी कंपनी के चैनल जियो स्पॉटलाइट के माध्यम के द्वारा, तो 24,300 और 24,500 नीचे के तरफ ये दो स्तर बताए थे। कल उसी के आसपास जाकर के बाजार थोड़ा बहुत आज रिकवर होने की संभावना है। मेरे ख्याल से दायरेबंद कारोबार फिर भी होगा, ऊपर के तरफ पड़ाव अभी भी है, फिर से वही पड़ाव आ जाएगा शैल भाई, 24,500 24,600, जिसको पार करने में कठिनाई हो रही थी। और धीरे धीरे करके इस वर्ष 2024 को हम अगले हफ्ते अलविदा कह देंगे। 25 तारीख को अगले हफ्ते क्रिसमस की छुट्टी है, फिर एफएनओ एक्सपायरी होगी 26 तारीख को। आज बुधवार का दिन है। मुझे लग रहा है कि बाजार दायरेबंद कारोबार करेगा, लेकिन क्षेत्र के आधार पर और कंपनी के आधार पर आपको काफी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो हरकत में आती हुई दिखाई देगी। और ये जो स्पष्टीकरण आज मैं ये मानता हूं शैल भाई कि ये सब स्पष्टीकरण एक दिन देर के बाद क्यों आते हैं, इनको पहले से ही आ जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से अगर ऐसी बड़ी संस्था कुछ प्रकार के नियम ला लेकर के आती हैं तो उस नियम का स्पष्टीकरण तभी होना चाहिए। मेरे ख्याल से बाजार में जो प्रतिक्रिया हुई कल, उससे काफी लोगों को हर्जाना भुगतना पड़ा था। और जो तर्क बाजार ने निकाला, तो ये तर्क निकालने का मौका देना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से पूर्ण स्पष्टीकरण होना चाहिए जब कभी भी वो खबर आती है कि एक दिन बाद आप स्पष्टीकरण भाई ये नहीं ये है ये नहीं वो है, ये मेरे ख्याल से असमंजस परिस्थिति खड़ी कर देती है। जी गौरांग जी, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि भारतीय दिमाग का तर्क और उसकी सोच का कोई सानी नहीं है। तो जहाँ बाल भी नहीं होता ना, उसकी भी बारीकी खोज निकालता है इंडियन ट्रेडर, और उसके बाद रेगुलेटर सोचता है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था जो ये लोग सोच रहे हैं। तो क्लैरिटी लाने के लिए ये क्लैरिफिकेशन दी जाती है, और आप बखूबी समझ रहे हैं कि ये कल की सेलिंग क्यों हुई। अब कुछ बातें जो हैं हम लोग स्क्रीन पर नहीं कर सकते, चाय पर चर्चा होगी आपके साथ, लेकिन यही ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय बाज़ारों को एक अनुकूल तरीके से प्रस्तुत करती हैं दुनिया के लिए। और कब से सर्कुलर निकल रहे हैं, कब से बात हो रही है एफआईएस पर लगाम लगाने की, लेकिन घोड़े जो हैं वो बेजोर तरीके से दलाल स्ट्रीट पर दौड़ रहे हैं। अब बताइए, ये जो बिकवाली का समय है, यहाँ पर क्या किया जाए। एक मैं आपको बात बताना चाह रहा था, बल्कि आपको मेरे से पहले ही पता है कि वापस डिफेंस काउंटर्स में बिल्डअप होना शुरू हो चुका है। एक अच्छा करेक्शन आया और अब स्थिति ये है कि हम लोग खड़े हुए हैं कुछ पायदान दूर बजट के लिए। अच्छा बिल्डअप होता हुआ क्या पसंद आता है? पूरा ही क्षेत्र पसंद आता है शैल भाई। आप तो जानते हैं जब से हमने आपके चैनल पर आना शुरुआत किया, हमारी प्राथमिकता रक्षा क्षेत्र, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, रेलवे पर हमारा क्या नजरिया रहा है। और मैंने अक्सर ये कहा है शैल भाई कि रक्षा क्षेत्र में निवेश करते हैं तो 3 से 5 साल या उससे ज्यादा का नजरिया रखें, जिससे आपके निवेश की गई पूंजी पर जब आपको समय बीतने का बाद पता चलेगा तो आपको अंदरूनी संतोष मिलेगा कि आपने वाकई में ऐसा क्षेत्र में निवेश किया लंबी अवधि के लिए जो आपको बहुत ही लाभदायक साबित हुआ है। और ये तो मात्र शुरुआत में, अब भी यही कहता हूँ शैल भाई, मूल्यांकन को लेकर के ठीक है, जिस प्रकार से दौड़े थे पिछले साल 1.5 साल में 100 150 200 300 गुना बढ़ गए थे, तो 40% या 50% करेक्शन आता है तो भी कौन सी बड़ी बात है, ये चले इस प्रकार से तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप छोटी मध्यम अवधि का मत सोचिए। मेरे ख्याल से रक्षा क्षेत्र, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां, में हमें लग रहा है कि ये एक बहुत बेहतरीन मौका है। अभी भी अगर आपने मौका चूक गए तो अभी भी देर नहीं हुई है। मैंने 5 पांडव के रूप में आपके सामने शेयर भी रखे थे, जो कि सीधे सीधे रिकमेंडेशन नहीं थे। फिलहाल रिकमेंडेशन जो हमारी है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, कोचिन शिपयार्ड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल है। इसके अलावा जो सक्षम और मजबूत कंपनियां, हालांकि रिकमेंडेशन नहीं है, मजगांव डॉक्स है, भारत डायनामिक्स है और बीईएमएल।
ये सभी सक्षम, और इसके अलावा शैल भाई निजी क्षेत्र की भी कंपनियां हैं। मिसाल के तौर पर साइंस डीएलएम है, पारस डिफेंस है, एलएनटी भी डिफेंस में कामकाज कर रही है। एलएनटी तो फिर भी फैला हुआ कारोबार है। तो अब मैं अभी भी सकारात्मक हूँ। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप डिफेंस, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग और रेलवेज में निवेश करते हैं तो आपका नजरिया थोड़ा बहुत और लंबा होना चाहिए। जी गौरांग जी, थोड़ी मोहलत चाहूँगा। यहाँ पर ज़रा प्री ओपन हमारे सामने अब आ चुका है। बहुत ही सटीक और मैच्योर प्री ओपन हमारे सामने, सिर्फ 20 अंक की गिरावट, और ये भी मुझको कम होती हुई दिख रही है। जिस हिसाब से क्लैरिफिकेशंस आए हैं सेबी के सर्कुलर के, सेबी के द्वारा, तो वहाँ पर कुछ हिम्मत और ढाढ़स बनता हुआ दिख रहा है भारतीय बाज़ारों में। आइए स्टॉक प्राइसेस पर नज़र डालते हैं। First of all, HDFC Bank, 13 rupees 50 higher, 1846. This is the most critical stock to look at as far as intraday is concerned, both for the Nifty and the Bank Nifty, as was a very heavy sell-off that we saw yesterday. One of the most pivotal stocks to probably prevent this sell-off or maybe to accelerate will be HDFC Bank today. Let's look at Reliance, the second heaviest weighted counter. 8 rupees 30 lower at 1237. We'll keep an eye out on other banks as well. Disappointing start for ICICI Bank, 17 rupees 50 lower, 1316. Axis is in the green. SBI, let's look at it, in the green, 2 rupees 75 higher. A bit of profit booking on TCS, 33 rupees lower, 42.95. And of course we have Infosys, 15 rupees lower, 1961. A very quick look into the NSE 500 space. Let's look at top gainers. Metals shining. That's because of the meeting that's been held between industry representatives of the steel sector and the government. There is talk of imposing import duty on cheaper Chinese imports. ITC 1% higher, 474. The demerger news of ITC hotels is now working itself up into the price. HCL Tech Grasim in the winners list. It's a quiet start as far as pre-open is concerned. We'll and defense. Defense, you've named a few stocks which are under active coverage, among them Hindustan Aeronautics, Cochin and Garden Reach, and preference is also for Masscom and BEL. What about railway? There is over the last 10 days an order flow that has come into wagon makers. It's come into anti-collision devices. What do you expect next from railway stocks, and maybe top 2 picks? I was not able to hear you clearly. Can you please repeat your question? Okay, top 2 picks in the railway sector. A lot of order flow is now getting released by the government, especially for wagon makers and anti-collision device makers. So I won't give a direct recommendation, Shell, because we don't have coverage on. So I mean, you mentioned about which companies can benefit. I can mention about them. It is not a recommendation, Shell. So Kernex Microsystem is by default one of them. One company that we covered when the IPO hit the street is IRFC. But let me say this, Shell. I think this anti-coalition system is a work in progress. But other than that, I think you have private players like Jupiter Wagons, Titagar Wagons, who are. I think one of these companies received a order day before yesterday from one of the state government. Correct me if I'm wrong. Though I'm repeating, it is not a direct recommendation. It is just mentioning companies which are strong contenders when it comes to the upgradation that's happening for Indian Railways, whether it is laying of tracks, high-speed tracks, whether it is comfortable wagons, coaches, whether it is going to be a bullet train, something like Mumbai, Ahmedabad, Mumbai, or whether it is going to be more launches of Vande Bharat train. I think all these companies will tend to benefit, whether private or public, including companies like IRCTC. Generally, the perception for IRCTC is that it's a ticketing partner for Indian Railways, but it does a lot more work other than ticketing for Indian Railways. Okay. One space, Gaurang, that has done phenomenally well is the IT sector, and that's
because of the rupee depreciation tailwind. What are your thoughts here? Plus the fact that Nasdaq is on a record high. What would you suggest to quality long-term shareholders in the mid-cap space where they can buy now and maybe reap supernormal returns over the next 2-3 years? Shall I will give more credit to the earnings capability and the turnaround that has happened in the IT sector. Less of it to the Indian rupee against the dollar, which is at a historical low, and possibly we might deteriorate on the rupee front against the dollar. Maybe 85 and crossover is virtually possible. And the fact is, Shailesh, that the dollar is not only stronger against the rupee, dollar is stronger against major currencies, whether emerging market or whether developed market. So not keeping that rupee dollar equation in front of me, if I have to look at the fundamentals, then I think the companies delivered decent set of number for the second quarter. The commentary from the management for third, fourth, and the next financial was equally very, very strong. I'm sure that with the situation that has turned for good in the US post the presidential election, other than the tantrums that we hear from Mr. Trump, president-elect to be, in terms of tax cuts and tariff hike, one needs to just wait and watch, because a lot of political leaders, they say a lot of things before the election, and once they are elected, whatever they have said goes into the deep freeze. So wait and watch over there. But mid-cap ideas, I think Coforge, LTI Mindtree, L&T Technologies, Persistent Systems, amongst the smaller names, KPIT Tech, Sant Limited, Tata LXI, including, that company which came out with an IPO but has been absolutely sideways from Tata Group, is Tata Technologies. I think the IPO was at about 875 to 600, correct me if I'm wrong, and currently at about 1,000 plus kind of levels, consolidating, trying to build a base. I think, and as a disclosure shell on Tata Tech, we had given a subscribe recommendation from a long-term point of view. So this is also an interesting stock to look at. Okay. Gaurang, I'd just like to play a devil's advocate as far as Coforge and Persistent are concerned. Isn't the rally overstretched in them, particularly Persistent? What you see is a 1:1 bonus, and the fact that if you look at the 1-year chart on Persistent, it's been a classic outperformer. Run up of such magnitude, and still we see very good and quality advice coming in from you to enter at current levels. Persistent, by the way, is the top mid-cap stock held by mutual funds in terms of assets under management. There is often a saying, beauty lies in the eyes of the beholder, share. And it depends upon what kind of time horizon you are looking at. And let me tell you, Shell, there are some companies listed in our Indian stock market who have been extremely investor friendly. After doling out dividends or after going split as far as the face value is concerned, after a longish period, maybe about a year and a half, or maybe 2 years, most of these stocks who have gone, who have adjusted for bonus, ex-bonus price, they come back to the bonus price. I'll give you a classic example, L&T, Larsen and Toubro. You just look at the last 10 years history in terms of how many bonuses they have issued and what was the price reaction after adjustment of ex-bonus and where the stock price is currently today. Very rarely you would get these kind of gems which really create value and wealth, rather not value, they create wealth. And creating wealth is the art in the stock market. So yeah, bonuses or splits do have their price adjustment and time adjustment factor share. But then looking at the company and the work the company does, and more importantly, the results that they deliver, I think that excites me to a great extent. Fair point. I agree to your assessment on Persistent, as also the view that you offered from the perch of L&T. That's been one of your top picks for a very, very long time. Let's analyze the auto space, Gaurang. A lot of disturbing data coming in from the Vahan website that tracks
online registrations of vehicles, an year-on-year drop of 24% in two-wheelers, and about 11-12% in passenger cars. How do you see this in terms of impacting the market? Look at Tata Motors. This is something that you've consistently recommended from 300 rupees. It went all the way up to 1150, now languishing at 780, 790. What's your call on the auto space? Extremely constructive, let me say this, Shah. Historically, start festive season from Dasera to Diwali to, the December month of a year. Auto companies end up giving huge discounts for festive offtake. And then at the end of the year, in the month of December, every year, they give you more discounts because they have to clear the inventory. And I honestly, I kind of fail to understand this psychology that people, 31st December after 12 o'clock midnight, when you enter the new year, 1st Jan 2025, that vehicle, if it is still in the inventory, it becomes 1 year old. Though it is just maybe 1 hour, 12 hour, 1 day, or 1 month old, it is considered to be 1 year old. I honestly have no capability to understand this psychology. Maybe it is a marketing gimmick that some of these car dealers, either first and second hand, have floated the market. But coming back to your question, I think with the kind of launches that these companies have lined up, as recently as the two fantastic EV models from Mahindra and Mahindra. Before that, we saw Tata Curve. In between, we saw a couple of other launches. Next year, beginning, I think you will see plenty more launches coming in from across verticals: two-wheeler, three-wheeler, four-wheeler, commercial vehicle. Ashok Leyland, the Switch Mobility 100% subsidiary, launched another new variant. So I hope, Shell, this is an opportunity. The only problem is, Tata Motor, there is not one, but one too many issues. One was them, of course, the second quarter earnings. Second was the slowdown in terms of offtake. But then you have China stimulus coming in. China is a big market for JLR. Expect that to do well. Domestically, I think you have news flow in terms of two parts: Tata commercial vehicle, Tata passenger vehicle, and value unlocking. You have statement made by the management about reducing debt. And then you have the possibility of JLRs being manufactured in Gujarat, Sanand, which will be a price benefit factor. So we remain constructive on Tata Motors, M&M, Maruti. We are positive on Bajaj Auto, TVS Motors, Hero MotoCorp, Ashok Leyland, and Eicher Motors, including a pure EV play, Olectra Green Tech. Fair point. Gaurang, just a bit of a detour into the markets. They've opened. I'll just be back with you. 31 points lower on the Nifty, 175 points lower on the Nifty Bank. IT index is in positive territory, but barely so. And the Nifty 500 is down 27. We'll take a quick detour into the top performers and then get back to Gaurang. So it's a modest and a mature start. There doesn't seem to be pain that many were expecting because of that SEBI circular. Let's hope that the worst is behind us. ITC, 2 rupees 65 higher, 472. Why do I point out on ITC? Because now the demerger of ITC hotels will start getting, the planned demerger of ITC hotels will start getting reflected into the stock price. Please keep this stock on your radar. Lever up 3 rupees 70. Bajaj Finance up 7 rupees 20. Now let's look at the index heavyweights. What is HDFC Bank doing? Down 3 rupees 10 at 1830. What is Reliance doing? 2.5 rupees lower, 1242.7. How about ICICI Bank, SBI, both on the back foot? What about Infosys? 3 rupees lower. So there's nothing to be worried about. It's a very, very mature reaction to a very strongly worded SEBI circular. Let's just pay a little more attention to what is happening to counters in the cash markets. We will look at some stocks which are on the green side in the FNOs, in the NSE 500 list. Shriram Finance 1.7% higher. This was the top loser in FNO yesterday, so strong move coming back in 3019. It's a day for pharma companies. Sun Pharma, Dr. Reddy's, Cipla,
are amongst the top 5 gainers on NSE 500. Apollo Hospitals is going full stream, 0.5% higher. Amongst the heavyweights, you have a strong move coming into Jyoti CNC. Remember, this is a stock that Sakshi started marking yesterday. Fresh record high, 3.2% higher, 1483. Jindal SAW, Root, Coromandel International and GIC Ray are amongst the gainers. Liquor stocks are doing pretty well. Radico Khaitan up 1.7% at about 2500. Let's get back to Gaurang and talk about the cement space. A fairly strong bout of consolidation that we've seen now getting reflected in stock swaps between Ambuja and Sanghi, Ambuja and Pennar. How do you see the cement space over the next 6 months or so, Gaurang? We've had a price increase of between 10 to 30 rupees per cement bag in the last 15 days. Well, so I think this price increase is likely to happen as we go into the new year 2025. It won't happen immediately because I think the CCI, that is Competition Commission of India, does watch over the moves that cement companies do and whether to find out any kind of cartelization has been put in place to artificially rig up the bag prices. It happened a couple of years back, if you recollect. Our sense is that the cement consumption theme is going to grow extremely well. You have budget coming up. I think there's going to be a decent amount of budgetary allocation towards creating infrastructure and modernizing the existing one. You have capex, private company capex coming through. You have one of the sectors which is the second largest consumer of cement, that is real estate, which is doing extremely well. You see yesterday, you saw day before yesterday the kind of performance. And of course, the reports that came in day before yesterday about how big opportunity the redevelopment market in Mumbai is. And as you know, Shell, you were in Mumbai. Mumbai is a city which is starved of vacant area of plots. And there is a lot of opportunity either in the western suburb or central suburbs or in the eastern suburbs or in central Mumbai. With respect to the kind of buildings that we have of ground plus 2, ground plus 3, which are of 1940s and 1950s. And most of them are, this pagdi system. And there is great scope for redevelopment because the ability for the landowner to reinforce the structure is extremely low. And the Maharashtra government political stability, Shell, has thrown in a lot of positivity for the real estate development and redevelopment in a city like Mumbai. Right. I agree totally with you as far as the real estate space in Mumbai is concerned. Gaurang, please allow me to mark a couple of new space stocks. VA Tech Vabag, an unfortunate development in the form of an order reversal to the magnitude of $317 million. The stock is down 17% at 1562. It was down limit, which is the 20% circuit at 1531, but that's how it is for the moment. Suddenly from a record high, it's slumped down 20%. Remember, this order itself of about 2,500 crores was equal to the annual turnover of VA Tech Vabag, and that's why you had seen such enthusiastic response to this order win, which now sadly is reversed. What else is in action? I'd like to watch steel stocks for a reason that the government is finally taking steps to ameliorate the pain that markets are facing on the selling side. Jindal Steel and Power 0.8% higher, 961. Vedant 0.5% higher. Steel Authority 0.3% higher. Nothing much happening in the market as far as the first 10-15 minutes of trade is concerned, except for the fact that pharma is buzzing and buzzing with strength. Look at Lupin, 1% higher, 2075. Look at Glenmark, 1% higher, 1534. Look at Cipla, 0.5% higher. Divi's Lab, Torrent Pharma, Apollo Hospitals, all in top shape, doing pretty well. IT is on a roll. You have Tata Elxsi up 1%, Wipro up 0.8,
HCL Tech, Emphasis 0.7, Coforge Tech. In fact, we track 18 stocks in the technology space in FNO. All 18 are in the green. And a very quick look at advanced decline before I come back to Gaurang again. Okay, 901 shares in the green, 1275 in the red, favoring bears. We track 19 indices for you. Only 2 are in the red, FMCG and IT. And that shows the defensive nature of the markets. Gaurang, time of disappointment in the FMCG space, lot of stocks showing fairly decent corrections. Are you bottom fishing here? Anything that catches your fancy? Maybe Lever, done nothing for 4 years. Maybe Dabur and Marico, done nothing for 5-7 years. What looks good as far as valuations are concerned? Well, so we are extremely positive on the entire FMCG theme. Starting with the name that you mentioned, Hindustan Unilever, ITC, Tata Consumer, Godrej Consumer, Dabur, Marico, Britannia, Nestle. Shell, inflation doing what it has done does lead to, mass level consumption going into a little bit of lower mode. But when this inflation starts easing off and the capability to spend increases, then the consumption gets driven to the next level altogether. Now, whether you are a short-term or medium-term trader, then I'm not qualified enough to comment on that. But from a long-term point of view, India was, is, and will always remain a consumption-driven theme. There are a lot of large marquee international names who still are striving to come to India and set up their shop over here. And you have a huge population of 140 crore and counting. And with that, you have a 35% young population within the age of 30 and 28 or below, which is going to be a huge driving force. So the problem with second quarter earnings was also disaster for it. And that was primarily led by a lower large metro tier 2, tier 3 cities consumption at a lower level, added with the normally robust semi-urban rural Indian market. That was also on the lower side. So you have both earnings disappointment led by the volume degrowth that we saw. But that should pick up as we go forward. Fair point. That's a good understanding of the space, and those that have disappointed for so long are the ones that probably will rise the most. Let's hope that is true for Hindustan Unilever. But selling pressure now probably making itself felt. Nifty Bank is down 270 points. The Nifty is down 61. And in terms of the advanced decline on the Nifty, let's find out the number of shares that are in the green as far as the Nifty is concerned. 21 are in the green, 29 in the red. Okay, it's a negative advanced decline. How about NSE 500? Only 173 shares are in the green versus 326 that are in the red. So this is not looking good. Amongst the top traded, the top 10, top 12 are counters that are in the red. That goes on to show what the market is thinking. VATech Wabag is the third most active traded counter. People are exiting even at 17% down. 285 crores is what is traded on VATech Wabag in the first 5, 7, 10 minutes of trade. Swiggy profit booking, nothing to be worried about, 1.1% lower, 591. Mazgaon down 2%, Tata Motors down 2.3%. What is gaining? Jyoti CNC 2.6% higher, ITI 3% higher, Ace Construction 3.9% higher, Jindal SAW 5.1% higher. So these are spaces that are doing fairly well as far as markets are concerned. All-time highs, okay, here we go. All-time highs are Jyoti CNC, KNS Technologies, Coromandel International, Radico Khaitan. That's are the ones that I would like to at least name on air. Gaurang, this newfound fascination for old world textile companies, I distinctly know you would remember India Card Clothing. This is a stock that hit 20% yesterday, up 10% again today. Little business to speak about, but lot of land assets in Pune. And of course, this Bangladesh crisis that is
impacting us positively on the textile space. Any top picks here? What looks good? So a couple of names over here: Raymond's, Vardhaman Textiles, Cable Kiran Clothing. These are some of the names, Shell, on which we have a positive coverage, and I think it was high time. You remember Shell some decades ago. India used to be a thriving textile market. Not only were we able to manufacture Hi Arun sir, can you hear clothes me? and textiles for our basic needs, but we were a huge exporter also. And thanks to the lackluster behavior of the government earlier, which led to a suicidal death of most of the marquee names at that point of time as far as the textile industry is concerned. Now, with the kind of revival in policies that the government has put in place, I think we are trying to recoup the lost ground, but it's a long Arun sir, way. can you hear me? And whatever has happened in Bangladesh or maybe China, I think we should grab this particular opportunity, especially with respect to Bangladesh, because they were the ones who took an advantage when we were suffering. So, what would look good? So I mentioned three names: Shell, Raymond's, Vardhaman Textiles, and Cable Clothing. So I think these are the three names. I'm talking about fundamental Shell. I'm not talking about Okay. short term. Yeah, I understand. Raymond Gorang is minus its real estate business, which is now a separate listed entity. This is, one of those old world horses that we discuss in the lines of L&T. Great wealth creator, and then it went quiet, and of course this huge value creation that's happened over the last 5-7 years, and now separate entities. Real estate, if you want to play in Mumbai, well, it's the Raymond real estate business, and of course the unbelievable brand equity that Raymond enjoys in the textile space. In terms of pure garment contractors like Gokul Das Exports and to some extent Himmat Singha Seede, would you have a favorite between these two, or you don't track them? Shell, we don't track them, so it will be difficult for me to comment on these ones. Fair point. The market's in fairly good shape as far as this knee-jerk reaction to the SEBI circular is concerned, but hectic activity as far as counters such as the fertilizer space is concerned. Look at fact, a very strong move coming in the PSU basket as far as fertilizers are concerned, and you have fact doing 1.78%, 1032.75. Please keep an eye out on NFL, on GNFC 0.3% higher, as also stocks such as RCF, which is Rashtriya Chemicals and Fertilizers, and the erstwhile favorites Madras Fertilizers. These are the ones that are doing very well. Look at Coromandel International, record high, 3.35% higher, 1877.95. A quick one from you, Gaurang, your favorite stock in the fertilizer space. So we have two names, Shell, Chambal Fertilizer and the one that you just mentioned, Coromandel International. And I'm not talking about budget, because every year when the budget is nearing, you see fertilizer related stocks gathering steams. We see much beyond the budget. We see great opportunity, and I think most of the fertilizers to huge manufacturing companies have delivered quite well. Some of the policy changes with respect to mixing neem with fertilizer has actually added to the offtake of end user rather than getting slippages. With respect to the government policy, more crop per drop and more yield from a farm or a acre of farm with respect to agri activity, and giving knowledge to the farmers as to how to use the technology, how to use the fertilizer, urea, and how to get the best yield and produce from your farm. I think these are some of the huge things and transformation that we are witnessing, and the direct benefit will go to fertilizer manufacturing companies, the two names that I mentioned. But I think we also need to give attention to
those companies which are enabling manufacturing of fertilizer urea, I'm talking about specialty and agrochemical companies. Okay, fair point. Gaurang, thank you so much for your wonderful conversation, and of course, it's always such a pleasure to host you. We look forward to you joining us again, but for the moment, Merry Christmas, and I'm sure we'll definitely meet before the new year comes in. And here's hoping the Santa Rally does wonderful benefits to the stock picking of Geojit Financial Services. Have a great day, my friend. Okay, ladies and gentlemen, let's take a detour into the market. 24,304 is where the Nifty is. For the moment, the bulls are putting a very strong show when it comes to protecting 24,300. Let us see where the cookie moves as far as intraday positioning is concerned. But look at GIC Ray. This is the government insurer. This is the government insurer which will probably run fairly strongly as far as December 21st is concerned. This is when the group of ministers in the GST Council meets and probably takes a positive direction on a cut on the GST. This is the tax that is employed on non-life and life insurance. That is why you see NIACL up 2.6%, 213.30. You have GIC Ray up 4% at 458. You have Star Health that's also doing pretty good. Star Health at the moment 2.5% higher, 491. So that's how the markets are moving as far as the insurance space is concerned. As good a time as any to look at HDFC Life, True ICICI, SBI Life, all of them in top shape. And just the right time to welcome Mr. Prashant Tapse, Research Analyst at Mehta Securities. A very good morning to you, Prashant, and a very warm welcome. Any stocks that catch your fancy in today's market? I think, yes, you are rightly talking about the insurance sector. I was focusing more on HDFC Life as a stock. One should focus on the back of the GST meeting, which is scheduled on December 21st. So all the other government PSU stocks are in positive zone, but HDFC Life, SBI Life are still left to start their rally because of the aggressive selling. The way how HDFC Life and SBI Life have done last 6 months. The growth in terms of month-on-month business update, I think HDFC Life and SBI Life have done better than the LIC or GIC. Yes, you have a point. At the moment, NIACL has shown an activity which is fairly strong in terms of volume. GIC Ray is the stock to watch. Already 100% of 5-day average is traded, about almost 13.85 lakh shares, 4% higher on 458. Jindal Saw in top shape, 3.6% higher. Coromandel International we've marked 3.2% higher. Bharti Hexa, Crompton Greaves, as also Tata Tele Maharashtra Limited are in top shape. Amongst the frontline counters, I think it's Reliance that is providing a lot of support to the Nifty, and why not well below 200-day DMA, 1254.7% higher. CLSA recently came out with a very positive report. A positional call on Reliance, Prashant. What are the charts telling you? I think yes, technically the position call can be taken here with at least a small stop loss beyond its Bollinger Band, which is below almost 1220 or 1215. I think it's a very short-term call, but again, I think downside is very limited with respect to risk-reward ratio. Reliance is giving very comfortable level for the risk takers. Target can be anywhere between 1300 and 1320 in a short-term period of time. I think it's a good trade to start today. Okay, ladies and gentlemen, we have with us one of the finest brains on the Lal Street, Mr. Arun Kejriwal, a man of immense standing and great learning, joins us to share his thoughts on the Lal Street. Namaste Arun ji, स्वागत आपका. बहुत बहुत आभार आपने समय निकाला और
चर्चा की बात हुई जी। नई नई बातें उभरती हुई दलाल स्ट्रीट में, अब सेबी का सर्कुलर आता हुआ ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में। क्या लगता है आपको, बिकवाली का माहौल चलता रहेगा दिसंबर भर या बहुत हुआ? भाई शैल, सबसे पहले मैं आपको 3 दिन पुरानी एक बात पर ले जाता हूं। फ्राइडे द 13th, उस दिन जो बाजार में हुआ काफी महत्वपूर्ण घटना थी। 1200 पॉइंट घटा और फिर 2200 पॉइंट या 2000 पॉइंट बाजार बढ़ा, और कई लोगों का ये मानना था कि शायद क्रिसमस की रैली शुरू हो चुकी है। एक चैनल पे मैं था और मुझे जब एंकर ने ये पूछा, अरुण जी सोमवार की सुबह 9 बजे क्या क्रिसमस की रैली शुरू हुई है, तो मैंने कुछ आंकड़े दिए शुक्रवार की ट्रेडिंग का, और आज मैं ये कह सकता हूं कि शुक्रवार को जो हुआ वो एक तरह से बाजार में पैसे वाले ने पूरी की पूरी बाजी मार ली। एक रिकवरी करी, लेकिन उस रिकवरी में उन्होंने जो उनको शॉर्ट काटना था वो करके अगले 2 दिन में उससे डबल माल बाजार में सप्लाई किया गया है, और बाजार आज इंपॉर्टेंट लेवल पर सपोर्ट लेने को तरस रहा है। मैं मंदी और तेजी की बात नहीं कर रहा हूं, बट निवेशक का ध्यान दोहराना चाहता हूं कि अगर आप ध्यान से देखें तो गोरे ने जो शुक्रवार को अच्छी खरीदारी की, उससे बहुत ज्यादा सोमवार और मंगलवार को बेचा है, और उसने वापस अपनी पोजीशन बना ली है। शायद शुक्रवार को गिरते हुए बाजार में उसने खरीदा और बढ़ते हुए बाजार में बेचा। जी अरुण जी, अगर हम आजकल के नियम देखें, ये बिल्कुल नियम कायदे और कानून के अंदर था। अब प्रॉब्लम ये है कि इतनी ज़्यादा वॉलीटैलिटी हो जाती है और हमारे निवेशक इस बात को समझते नहीं हैं कि भाई आपको एफएनओ में ट्रेड बहुत कम करना है, ना के बराबर रहने दीजिए उसको। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के लिए रहने दीजिए, उनके लिए जो मशीनें लगा देते हैं इंसान से compete करने के लिए। आपकी व्यक्तिगत राय क्या होगी, जो सेबी ने कदम उठाए हैं, क्या ये ठीक है? अगर आप एक वर्ग के लिए बात कर रहे हैं, छोटे निवेशक के लिए बहुत अच्छा कदम माना जाना चाहिए, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव का ट्रेड है ये छोटे निवेशक समझते नहीं। सबसे बड़ी बात जो है, ये एक लेवरेज ट्रेड है। जब आप कैश मार्केट में काम करते हैं, आपके पास जितने रुपए हैं आप उतने रुपए से माल खरीद सकते हैं, और आपके पास जो शेयर हैं वो आप बेच सकते हैं। जब आप डेरिवेटिव में करते हैं तो आप लेवरेज करते हैं, क्योंकि आपके 100 रुपए के सामने आप फ्यूचर्स के ट्रेड में एक मल्टीपल वैल्यू का एक्सपोजर लेते हैं। और जहां तक आप ऑप्शंस की बात करें, उसमें तो एक तरह से अगर आपने प्रीमियम ले लिया या दे दिया तो आप एक ऐसा एक्सपोजर ले लेते हैं जिसका शायद आपको अंदाजा नहीं है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप एक तरफ से देखें तो आपके फायदे में है। छोटे अमाउंट में आप बड़ा पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर गलत होता है तो शायद आपकी पूरी पूंजी साफ हो जाती है। ये चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरा मानना है कि सेबी ने जो कदम उठाए हैं, लॉट साइज बढ़ाया है, आपको बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि डेरिवेटिव से आम निवेशक पैसा नहीं कमाता, ये एक बहुत ही बढ़िया कदम है और काबिलियत तारीफ है। चलिए, ये तो बात हो गई ओवरऑल मार्केट की और बाजार की। अरुण जी, अब बताइए करना क्या है? आप एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अच्छी खरीदारी करने की, उस समय जब कोई नज़र नहीं डाल रहा। आज पहले चलिए लिस्टिंग्स की बात निपटा लेते हैं। मोबीक्विक, विशाल मेगा मार्ट और साइज सर्विसेज की लिस्टिंग आज है। इन तीनों में से पसंदीदा स्टॉक कौन सा है?
किस में आपने अप्लाई किया और किसको आप लिस्टिंग पर खरीदेंगे? देखो, अंदर की बात अगर आप जानना चाहते हो, जो कंपनी अच्छी लगती है और आप अप्लाई करते हो उसमें शेयर नहीं मिलते, ये तो हकीकत है। अगर आप जबरदस्ती ये सोचकर अप्लाई करो कि भाई 3 में से 1 में तो लग जाएगा, जो सबसे जो कहते हैं ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग शेयर होता है, उसमें शेयर लगता है, नेट नेट आप पैसे बना नहीं पाते। लेकिन अगर आप सीधा साधा सवाल पूछें कि भाई जो लिस्टिंग हुई है, मेरे ख्याल से विशाल मेगा मार्ट की लिस्टिंग उम्मीद से बहुत ज्यादा ऊपर हुई है। 78 रुपए के सामने 104 रुपए की लिस्टिंग हुई है, जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही शानदार लिस्टिंग है। मोबी क्विक छोटी इश्यू थी, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू था, और लोगों को पेटीएम के डिबैकल जो हुई थी लिस्टिंग के बाद, उसके बाद इस कंपनी पे ज्यादा भरोसा था। उसकी बहुत शानदार लिस्टिंग हुई है। मेरे ख्याल से इसकी लिस्टिंग हुई है मोबी क्विक की 440 रुपए पे ये शेयर लिस्ट हुआ है। 279 इसकी इश्यू प्राइस थी। साई लाइफ की जो लिस्टिंग है 549 के सामने 650, मतलब ये भी 101 रुपए ऊंचा लिस्ट हुआ है। तो लिस्टिंग तीनों के तीनों अच्छे हुए हैं और शायद संकेत देते हैं कि बाजार में निवेशकों जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया और लकी थे, उन्हें पैसा बना है। फेवरेट इनमें जो मेरा था वो था विशाल मेगा मार्ट, लेकिन 104 रुपए के भाव में मेरी जो उम्मीद थी गुड परफॉर्मेंस की, वो पूरी हो जाती है। इस भाव पे अब मैं निवेश करने में कंफर्टेबल नहीं। जी, चलिए अब और चर्चाएं करते हैं। अरुण जी, आप माहिर हैं उन शेयर्स में खरीदारी करने के लिए जहां पर लिस्टिंग हुई धमाकेदार, लेकिन 5-6 महीने के बाद वो सुस्त पड़ गए क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स ने बेचा, प्रमोटर्स ने बेचा, और कुछ शेयर्स तो आईपीओ के नीचे चलते हैं। अब बताइए कहां पर आपने निशाना साध रखा है, कहां पर खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, उस स्पेस में या कहीं और भी? आज लगता है शैल तुम कुछ खास एजेंडा लेकर आए हो मेरे से नए साल के शुरुआत के पहले बहुत कुछ खजाने में से निकालने का। कोई बात नहीं, चेष्टा करूंगा। फार्मा स्पेस में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनमें मुझे आज के मौजूदा स्तर पर, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये शेयर सुस्त हो गए हैं, बट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। हालांकि ये अपने आईपीओ प्राइस से अभी भी ऊपर है। 2 कंपनी खास इसमें मैं आपको, 3 कंपनी में खास इसमें आपको लिस्ट में दूंगा। एक है इंडीजीन, दूसरा है ब्लू जेट, और तीसरा है मेडी असिस्ट। कुछ आपके वॉइस आ रहा है आपके शो में, अगर आप आपके पीसीआर को कहेंगे कि ये लिस्टिंग का आवाज को बंद कर दे। ये 3 मैंने नाम कहे, ब्लू जेट, राइट सर, मेरे मेडी असिस्ट। जी, ये तीनों हमने दिखाए हैं। मैं ज़रा, मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं ज़रा पीसीआर से बात करता हूँ। आपका जो एको आ रहा है कान में, वो ज़रा हम लोग ठीक कराते हैं। लेकिन ये तीनों काउंटर्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से, चलिए अरुण जी को मेरे ख्याल से जो कान में खटखट हो रही थी वो अब बंद हो गई। चलिए, इंडीजीन के जो नतीजे आए थे सेकंड क्वार्टर के, वहाँ पर थोड़ी निराशा दिखी, लेकिन बहुत ही पारखी निवेशक हैं अरुण जी, और पेन को खरीदने में बहुत ही महारत हासिल रखते हैं। इंडीजीन का ऑल टाइम हाई 726 रुपये था,
अब आपको 580 590 के आसपास मिलता हुआ दिख रहा है। मेडी असिस्ट एक अभी रिसेंटली लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, 619 रुपये। ये एक टीपीए है। किन्हीं कारणवश जब आप अस्पताल पहुंचते हैं और अपना इंश्योरेंस का काम उससे पेमेंट करते हैं, तो ये टीपीए आपसे बात करता है और इंश्योरेंस कंपनी से बात करता है और हॉस्पिटल से बात करता है, और जो काम है वो बहुत आसान तरीके से करता है। ब्लू जेट ये भी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है हेल्थ केयर स्पेस में, 540 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई। चलिए, ये 3 काउंटर्स तो बात हुई हमारी फार्मा स्पेस में और इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस स्पेस में। कुछ खासा रुझान अरुण जी जो आप इस स्पेस को चूज कर रहे हैं, क्या यहाँ पर लंबी अवधि के निवेशकों का ध्यान कुछ ज़्यादा ही है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर हॉस्पिटल स्टॉक्स भी रिकॉर्ड हाइज के आसपास हैं। क्या कारण कि आपने ये तीनों जो शेयर बताए ये आसपास के सेक्टर से ही ताल्लुक रखते हैं? सर, महज एक कोइंसिडेंस है। इन तीनों कंपनियों को मैं लिस्टिंग टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। एक फ्लरी हुआ, उसके बाद एक करेक्शन हुआ, और जैसे फॉर एग्जांपल इंडिजीन की बात करूं तो कुछ समय पहले इंडिजीन में एक ओएफएस के तहत प्रमोटर एंटिटी, पी एंटिटी जो था, उसने माल बेचा और वहां पर शेयर में एक गिरावट आई थी, क्योंकि ये ऐसे जो बिक्री होते हैं स्क्रीन पे वो नॉर्मली मौजूदा स्तर से एक डिस्काउंट पे होते हैं। उस बिकवाली के कारण ये शेयर में एक गिरावट आई। गिरावट होने के बाद में कुछ शेयर और नीचे गया और पिछले 7-8-10 दिन से 580-85 के रेंज में कंसोलिडेट करके ये आज एक अपवर्ड मूव इसने दिया है। वापस एक महज कोइंसिडेंस कि मैंने शो पर इसकी बात की, लेकिन ये इसके पहले ही बढ़ चुका है। ये तीनों शेयर मुझे अट्रैक्टिव लगते हैं। ए, उनके बिजनेस मॉडल के कारण, बी, इनके अंदर में जो रन अप हुआ है उसके बाद में एक करेक्शन भी हो चुका है। तीसरा, जब बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है तो लोग फार्मास्यूटिकल सेक्टर को एक डिफेंसिव सेक्टर की तरह देखते हैं और पैसा उसमें पार्क करते हैं, क्योंकि इसके अंदर में खराब टाइम पे भी शेयर में गिरावट बाजार से कम होती है। सही बात है। अरुण जी, काफ़ी परेशानी का दौर चलता हुआ जहाँ तक कि एफएमसीजी क्षेत्र का सवाल है, बहुत ही बिकवाली। ये हम लोग जो लंबी अवधि से बाज़ार में रहे हैं, जुड़े हैं, कुछ निराशा सी दिख रही है। लीवर ने कुछ नहीं किया पिछले 4-5 साल। गोदरेज, मैरिको ने, माफ़ कीजिए, डाबर और मैरिको ने भी कोई ख़ास रिटर्न नहीं दिए। आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो हम लोग कुछ ज़माने पहले बात करते थे कि भाई मिडिल क्लास है, बढ़ती जनसंख्या है, देश में हर चीज़ का, खासकर स्टेपल्स की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, देयरफॉर ये शेयर जो है हमेशा की तरह मल्टी बैगर ही रहेंगे, लेकिन काफ़ी निराशा हाथ लगती हुई मध्यम अवधि और लंबी अवधि के निवेशकों को, खासकर लीवर में। इस मुकाम पर आप इन काउंटर्स को कैसे देखते हैं? शैलेंद्र, आपने बहुत अच्छा कहा और आपने कई सारे कारण बताए जो इन कंपनियों को आज तकलीफ दे रहे हैं। एक चीज इसमें जो अपने को देखना चाहिए, पहले आपके पास महज 5-7-10 कंपनियां थी जो आपको सब कुछ देती थी। आज ये 5-7-10 दिग्गज कंपनी को अगर आप छोड़ दें तो 50 और नई कंपनियां ऐसी आ गई है जो हो सकता है इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मिलकर ये 50 कंपनी, ये 10 कंपनी के बराबर अवश्य हो जाती है। तो कंपटीशन बढ़ा है। ये बड़ी कंपनियों के जो एक्सपेंडिचर हैं वो ये छोटी कंपनी में बहुत कम है। ये अपना प्रोडक्शन, टर्न अराउंड टाइम काफी कुछ हद तक बड़ी कंपनियों से मच बेटर मैनेज कर पा रही है, और कंज्यूमर के पास में बहुत बहुत ही बड़ा उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो धंधा प्रॉफिटेबली कर सकते हैं। डिमांड कुछ हद तक, जैसे रूरल
ये रूरल स्ट्रेस की जो बात हो रही थी 6-8 महीने पहले, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है। लेकिन जो चाल एक लीवर को मिलनी चाहिए या इन कंपनियों को मिलनी चाहिए, उसमें मेरे ख्याल से शायद एक या मैक्सिमम 2 क्वार्टर की अभी भी समय बाकी है, जब ये चाल आपको देखने को मिले। अ, मतलब अर्ली इन्वेस्टिंग वालों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप 1 साल के व्यू से एफएमसीजी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, तो छोटा छोटा एसआईपी निवेश अगले 3 से 4 महीने में आप इनके कुछ कंपनियों में इनमें कर सकते हैं। लेकिन आपका आपका होराइजन इन्वेस्टमेंट का 1 साल का मिनिमम होना चाहिए। जी। और अरुण जी, जो हमारे टाइम की पुरानी कंपनीज थी टेक्सटाइल स्पेस में से काफ़ी वापस आती हुई, न जाने कब बात हुआ करती थी राजस्थान स्पिनिंग वीविंग मिल्स की, कब हम लोग चर्चाएं करते थे वर्धमान टेक्सटाइल्स की, अरविंद मिल्स और अनेक ऐसे काउंटर्स जो एक ज़माने में ब्लू चिप्स माने जाते थे, वो बांग्लादेश की क्राइसिस की वजह से अब हमारे सामने एक अच्छे स्तर पर उभरते हुए दिखते हैं। टेक्सटाइल स्पेस में कोई आपका पसंदीदा स्टॉक जो हम लोग 20-30 साल पहले देखते थे, अब वापस आता हुआ दिख रहा है? मैं एक छोटा सा एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ आपको, आपकी इजाजत हो तो। 5 दिन पहले मैंने एक मैनेजमेंट को मैं मिला। जी बिल्कुल। उसकी हाल ही में आईपीओ खुल रही है। तो जब मैं उनसे मिला तो बातचीत करते करते हमने कुछ कंपनियों को डिस्कस किया जिनकी शुरुआत उस ग्रुप की टेक्सटाइल को लेकर हुई थी। अगर आप देखें तो कई ऐसी कंपनियां हैं जिनकी पहली, दूसरी, तीसरी कंपनी टेक्सटाइल मिल होती थी और उसके बाद में ग्रुप ने बड़ा विस्तार किया। कहने का तात्पर्य कि टेक्सटाइल से पैसा कमाकर ग्रुप डाइवर्सिफिकेशन करता था। अब पिछले 15-20 साल से टेक्सटाइल में जो जाता है उसके बारे में ये कहता है कि अब इस ग्रुप की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो चुकी है क्योंकि इसने टेक्सटाइल में पैसा डाला है। ये बदलाव मेरे ख्याल से 50 से 60 साल के अवधि में हुआ है। अब ये जो बांग्लादेश की क्राइसिस है बड़ी अनफॉर्चुनेट है। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, अपना पड़ोसी देश है, उसके लिए भी अपने को अफसोस होता है। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो भारतवर्ष को कई सालों के बाद में, मेरे ख्याल से 2 शतक के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये एक वापस चीजों को कैप्चर करने की। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, जिनको स्टेबिलिटी, जिनको टाइमली डिलीवरी और जिनको वैरायटी एंड क्वांटिटी चाहिए, वो वापस भारतवर्ष में कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं। इनको भारत में एक क्वालिटी, एक क्वांटिटी, एक डिलीवरी एश्योरेंस सब कुछ मिलता है। तो मेरे ख्याल से चाहे आप स्पिनिंग की बात करें, वीविंग की बात करें, फैब्रिक की बात करें और गारमेंटिंग की बात करें, ये वापस टेक्सटाइल के लिए एक बहुत बड़ा रिवाइवल होना है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि अगले क्वार्टर में इसका पूरा बेनिफिट दिख जाएगा, ऐसा नहीं होना। इसे समय लगेगा क्योंकि सीजन के हिसाब से ऑर्डर दिए जाते हैं और ऑर्डर देने के बाद में डिलीवरी इफेक्ट होने में करीब 1 तिमाही और लग जाता है। तो आने वाले तिमाही यानी कि जो मार्च के रिजल्ट्स आएंगे भारतवर्ष में टेक्सटाइल कंपनियों के, गारमेंट रिलेटेड कंपनियों के, उसमें आपको एक अच्छा खासा बदलाव देखने को मिलेगा। ये तो व्याख्यान हुआ कि सेक्टर क्या कर रहा है और क्या कर सकता है, लेकिन मार्च तक के लिए या मार्च से आगे अरुण जी, 1-2 टेक्सटाइल नेम्स जहां पर कोई ऐसी झलक दिखती हो कि तेजी आने वाली है। देखिए, बड़े जो टेक्सटाइल प्लेयर्स की अगर आप बात करें तो अरविंद एक जमाने में बहुत बड़ी कंपनी होती थी, लेकिन अरविंद ने अपने कंपनियों को, शेयर होल्डर को वैल्यू क्रिएशन करने के लिए उसी कंपनी के 4-5 टुकड़े कर लिए हैं।
तो अरविंद समूह की कंपनी के में आप निवेश कर सकते हैं। कंपनीज आप अलग अलग उनके नाम देख लीजिए, उसमें निवेश कर सकते हैं। रेमंड एक कंपनी है जिसने अपनी कंपनी के दो जिसे कहते हैं डिविजन्स किए हैं, ये दोनों अट्रैक्टिव लगते हैं। इसके अलावा आप देखें, जो स्पिनर्स थे जिनकी हालत पिछले साल थोड़ी सी खस्ता हो गई थी, अब वो सब रिवाइव कर रहे हैं। गुजरात के स्पिनर्स हैं, आपके नॉर्थ इंडिया के स्पिनर्स हैं, वर्धमान ग्रुप है, महावीर ग्रुप है, ये सभी कंपनियों में आप निवेश कर सकते हैं। और एक गारमेंट कंपनी जो है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इसमें भी आप ध्यान दे सकते हैं। जी चलिए, ये बात तो हुई अरुण जी टेक्सटाइल स्पेस की। इंटीग्रेटेड प्लेयर्स अरविंद, रेमंड और स्पिनिंग मिल्स में वर्धमान और गारमेंट कॉन्ट्रैक्टर में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। अरुण जी, बजट आ रहा है, आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से बजट के माहिर रहे हैं कई दशकों में। कोई बिल्डअप अच्छा रेलवे स्टॉक में, डिफेंस काउंटर्स में, फर्टिलाइजर स्पेस में होता हुआ दिखता हो, जो मध्यम अवधि में हमारे व्यूअर्स के लिए कारागार साबित होगा? एक एक स्टॉक इस स्पेस में से। देखिए, बजट एक ऐसा इवेंट है जहां पर हमेशा 4 से 5 सप्ताह पहले एक एक्शन बिल्डअप होता है। और जहां तक अपने नए निवेशक हैं, जो वो बोलते हैं ना कि पोस्ट कोविड ईरा में जो शेयर बाजार में निवेश किए हैं और जिनकी संख्या आज के दिन पुराने निवेशकों के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा है, ये डिफेंस, पावर, रेलवे, इसमें बहुत ज्यादा निवेशित हैं, ओवर इन्वेस्टेड हैं, और इनको एक्सपेक्टेशन ये क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, उम्मीद से ज्यादा है। अब अगर मैं छोटी सी एक टिप्पणी करूं रेलवे में, रेलवे का जो बजट है लगातार हर साल बढ़ रहा है, और बजट में ही उम्मीद है कि ये कुछ चेंज होगा, ऐसी की दरकार नहीं है। अच्छा खासा इसमें स्पेंड हो रहा है, रेलवे में तरक्की देखी जा रही है। नए ट्रेन्स, गुड्स, फ्रेट जो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है रेलवे का, उसके अंदर में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है। ये सब चीज देखते हुए ऐसा लगता है कि ये सब में इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन आम जनता जो बिल्डअप करके इसके अंदर में प्री बजट रैली में निवेश करके अगर मान लीजिए भाव 15-20% बढ़ा देती है, तो पोस्ट बजट उन्हें निराशा ही होनी है। जो भी एक्सपेक्टेशन होता है वो मीट नहीं होता, क्योंकि जो करना है वो अपने आप हो रहा है। जी अरुण जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपने समय निकाला और कुछ बहुत ही अच्छे शेयर्स की चर्चा करी। मैं बता देता हूं उन दर्शकों को जो थोड़ी देर में आए या नोट नहीं कर पाए, ध्यान दीजिए ब्लू जेट मेडिकल, मेडी असिस्ट और इंडिजीन पर। ये तीनों कंपनीज अरुण जी के अनुसार फंडामेंटली बहुत अच्छी हैं और तीनों अपने ऑल टाइम हाइज से ठीक ठाक कम लेवल पर ट्रेड करती हुई दिख रही हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट और अच्छी फंडामेंटल ग्रोथ, तीनों की उम्मीद इसमें रखिए। अगर आप टेक्सटाइल स्पेस में निवेश करना चाहते हैं तो अरविंद और रेमंड, और कॉन्ट्रैक्टर्स, गारमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। अरुण जी जुड़ते रहेंगे और आने वाले क्रिसमस की शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं। मैं ये मान के चलता हूँ जो 2024 में आपने कमाया उससे कई गुना ज़्यादा आप 2025 में कमाएंगे, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। ये लेडीज़ एंड जेंटलमैन थे अरुण जी, और अब बिल्कुल सही मौका कि हम ध्यान दें लिस्टिंग्स पर। मोबी क्विक सिस्टम्स की लिस्टिंग और विशाल मेगा मार्ट की लिस्टिंग्स आपके सामने अब स्क्रीन पर आती हुई दिखेंगी। Got the shot. Thank you so much. Gentlemen, please
please take your seat. Mr. Kapoor, sir, you stay with me because you stay with me, sir. We'll be doing. Ladies and gentlemen, were the two newly listed companies. MobiKwik, let me give you a price 80% higher at 503. Vishal Mega Mart 39% higher at 108. We will wrap it up here, ladies and gentlemen, and then again join you back at 12 o'clock. The Nifty down 74, the Nifty Bank down 388, and the IT index in the green 30 points higher. Thank you for joining us. Have a nice day. अध्यक्ष महोदय, मैंने तो सीधा सीधा सवाल सरकार से पूछा था, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हम न्यूनतम मजदूरी के साथ तुलना नहीं कर सकते क्योंकि किसान की मासिक आय क्या है इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, सरकार ने वादा किया था कि किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, तो किसान की आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई, सरकार ये जवाब दे दे। और अगर नहीं हुई तो कब तक इसको पूरा करने का काम करेंगे? किसान की आय दूनी कब होगी? या दूसरा मानी बाद में पूछ लेंगे, सप्लीमेंट्री में ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय के बारे में एनएसएस की एक रिपोर्ट, वही हम लोग प्रमाणिक मानते हैं। उसके अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय 2002-03 में ये आय थी 2115 रुपया महीना। ये बढ़कर 2018-19 में हो गई 10,218 रुपया महीना। और इसके बाद का सर्वे अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। और उन प्रयत्नों को अगर आप देखें तो हमने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है। पहला, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत कम करना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथा, अगर प्राकृतिक आपदा आए तो नुकसान की भरपाई करना।